Namaste, Prashant, Naren, Snehal, Harshal, Sachin. Lovely to see all of you for Happy Minds number, I think, 1211. Akshay, Ganesh, Smita, Sailesh, and all those names which flashed by. Shivangi. Oh, finally, the name has been changed to Shivangi. Balraj, Lahu, Kamble. Areva, that's nice. Namaste, Samson. Somebody has logged in. अरे नाम तो चेंज करो अपना. Umakant, Namdev. Chalo. Lovely to see all of you. And all of you join me on YouTube. Welcome back to this week's Happy Minds. I am traveling. I'm in Delhi and I'm taking the Happy Minds from a location in Delhi. Suprabhat, Shruti, Pankaj, Ratnali, Pooja. Lovely to see all of you. Chalo, great. Anji, those who have joined me for the first time, what we do in Happy Minds is we start with meditation, and after meditation, we go into a round of success story sharing. And then I share with something which I have in my mind. And then, of course, we have time for some question and answers if you have any questions. So you can just think of some questions अगर आपके मन में कुछ सवाल है which you would like to ask me. And if they're in the syllabus, if I am capable of answering them, I would throw some light on that. And that's how Happy Minds happen. तो अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं, you can type in first and you can also type in the city you're from or whichever place you're from. So मुझे मालूम पड़ेगा आप लोग कहाँ से आए हैं. And love you for the lovely messages, notes, feedbacks which you have been sending. Keep them coming for all HMs. So whether you see it live on Zoom or you see it on YouTube, आप भेजिए message भेजिए, and whatever messages my team can forward to me, I would love to share. So a few success stories which I came across last week. One is from Chrysalis and Hemant Bibekar, and when I met him yesterday, he shared that he's opened 5 franchisee stores and he's looking forward to 5 more post Diwali. So he said I had a target of 5 before Diwali, and that has happened. Why this is significant for him and also significant for me, because the last almost around 8-9 years he has been with me, and I've been pushing him because the kind of work Hemant has been doing is beautiful, wonderful, from a perspective of from a client's perspective, because I happen to be his client also. So I've got his products installed at my place, and जब मैंने उनके he's into window solutions, and the kind of work he has been doing is great. And जब मैंने वो solutions उनके लिए, and I said this is इतना बढ़िया quality है, why are you not expanding, why are you not growing? And होता है, you take some time to do digest and put things into perspective, and थोड़ा confidence build होता है over a period of time. And I'd been kind of pushing him. And finally, he gave me the news yesterday that we opened 5 franchisee stores. So that's a great step ahead. And then he says yesterday कि सर वो आपका लताड़ना बड़ा जरूरी है, जो आप, and that's a word he used, आप लताड़ते हो तो बहुत कुछ हो जाता है. And I said ये तो बड़ा यार चक्कर है, because मैं कितने लोगों को लताड़ूंगा, कितनी बार लताड़ूंगा. You got to do this on your own. But nevertheless, happy that he could reach to this state, and he's looking forward to many more stores. I don't know if Hemant is there today with us in Happy Minds or not. If you're there, Hemant, you can give a high five here, and आज Hemant कहीं और है. And the second success story is from Raghavendra Kulkarni, lovingly called Raghu. And when he met me, he says, sir, I had to travel outside for work, and there's one beautiful insight which I want to share with you, which I found, and he shared also with me when we were talking, is about the transparency, which the benefit of transparency, whether it be your relationships, whether it be with your clients, your customers. And this one value which we have in our fraternity of entrepreneurs, whom we call as the Chrysalis Entrepreneurial Forum. और उस फोरम में एक ग्रुप बना हुआ है जो 10 कमांडमेंट्स के साथ जीता है. उसमें से एक कमांडमेंट है दैट समवेयर in the way we live our life, can we be more transparent. तो हमने ओथ ली है that we'll be transparent and ethical in all our dealings. तो उसमें he says transparency has played such a wonderful role in my life.
So he had to travel outside for work, and client का एक order आने की संभावना है, and that order is big. You got to print almost around 1 lakh copies for one of your customers. 1 lakh books have to be printed, and as a printer, this is a good order, a decent order for him. And he says, अगर मैं order लेके निकल जाता हूँ for my business travel, so the client will feel अच्छा order लेने के लिए मारा मारी किया और order मिला तो भाई साहब गायब हो गए. So he went to the client and he shared with transparency that I got to travel, it's important, but I also need your order. And एक होता है ना मन में कि अभी क्लाइंट मना कर दे कि अच्छा तुम लौट के आ जाओ फिर देखेंगे, and then once it's gone, it's gone. And he says, I was so honest and upfront about my communication with him and my situation. The client not only gave the order to me, he expedited the entire process. And he ensured that the order is placed much before he starts traveling, and then whatever had to be done was done. And he says that's the beauty of transparency. And जो आपके ऊपर विश्वास कर पाए आपके ट्रांसपेरेंट होने के बाद, आई थिंक वही तो अच्छे सच्चे रिलेशनशिप होते हैं. सो great going, Raghu, and congratulations for that. So these are some success stories, and of course, the third success story is a bit of mine, and a lot of one another Christian called Nimesh Desai and his son Meet Desai. The company called Tekera. It got listed on the stock exchange on 13th, and we were there. And since I'm on board of the company as a director there, so and I'm a mentor to Nimesh and Meet. So we were there in National Stock Exchange. So it was a great moment because मेरे लिए भी पहला moment था where I was on stock exchange, and stock exchange में वो bell ringing ceremony में I was there. So we were waiting for the bell to the stock exchange to list the stock, and वो 10, 9, 8 वो जब हुआ, and suddenly the stock was on the exchange open for trading, and it shot up it was listed at 82 rupees, and immediately it went up to 130 odd rupees or so. So there was so much of euphoria, joy, that the market has accepted the company in such a wonderful way. Almost around, it touched the upper ceiling, and I think yesterday also it was up. So that was a great moment for all of us, that a company, you're traveling with the company for the last so many years. You're working inside a company. You are ensuring that the things fall in place. और आप उसको फिर IPO level तक लेके आते हो. And then one day, the dream which they had seen, the dream which we all had talked about, thought about, spoken about so many times, और वो ड्रीम आपके सामने ऐसा होते हुए दिखती है. And that's what happened on 13th. So संदीप गोले क्या बोल रहा है सर, कल 137 6% अप था. अरे yes, I hope that, and I wish that the stock goes up. But then there was one more thing to it, and I want to share with all of you also about it, which I shared with the company founders. तो वो हो गया, स्टॉक लिस्ट हो गया सुबह 10 बजे. 10:30 ceremony got over, and then by the time we wound up, it was 11:30. And then we came back to a hotel, and it was a moment which you want to really relish and enjoy and talk about. It's a lot of stories about how it started, how it happened, and what all we went through. So I was sharing with them that the IPO journey was not about the celebration of getting the stock listed, having a name on the stock exchange, or the ringing of the bell. It is also a reflection. It's also a symbol of what the company went through. So I was thinking about what all the company went through. So how do I describe what the company went through? Should I say it was blood, sweat, and tears that the company went through for years, right? Or should I say that the company we went through against all odds? Because actually we went through all odds. Or should I say that we rose from the ashes? Because that's what happened many times. The company was turned to dust, and many times we had to rise from the dust up. Or should I say that we did not leave any stone unturned? Because we did turn n number of stones on the journey towards the IPO. Or should I say that we burned the midnight oil? Because we did burn the midnight oil. So we did so many things, and that's why the IPO could happen. It didn't happen because it was a cakewalk. It was difficult, challenging, demanding. And this celebration बनता है उसके बाद, जब इतना सब हुआ तो celebration तो बनता है. But
couple of things I shared with the founders after that. I said, celebration's over. But one more thing is there, that this IPO is also a promise from our side for the future. It's also a reflection of the trust which people have had on the company. So many people have put a bet on the company. Now, with that bet on us, that recognition, that realization of the responsibility has to be there every day. And that responsibility should make us dream bigger than what we have dreamt so far. So we dreamt big and we reached the IPO. Now the sense of responsibility should even make us dream bigger. We set our targets, we set our goals, but now this trust which has been uh, showed on us, this trust should make us have higher aspirations. We slogged a lot, we worked a lot, but now it's time that we actually give our best, because the trust of so many people is there on us. And as they were listening, and they were saying, "Ha, ye hai." And I said, one more thing, let's forget about the stock exchange. Ho gaya, that's gone, that's done. So Nimish says, "Sir, ek din to enjoy karne do na, kya aap?" I said, "That's over. For me, it's over. We've reached there, and trust me, by a time in a few hours, you will also realize, कि हाँ ठीक है ना." So he has been getting calls from morning. जैसे वो list हुआ, a lot of friends, family, those who were not there in the ceremony, they started calling up, congratulations. Anybody, everybody who knew him, customers, vendors, सब phone कर रहे हैं कि साहब बधाई हो, बधाई हो. And I, as an observer, I was seeing him, and since I've been, in a situation where you have done something and people call on you and they wish you. तो वो भी सिचुएशन मैंने देखी है. तो आई न्यू दैट ये अभी यूफोरिया जो है ना, खुद ब खुद अंदर जो है ना, कम 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 होता जाएगा. Yes, of course, you go through your emotional state. The founders were emotional about it, and what they have been through is what they have been through. तो हर इंसान इमोशनल होता है, एंड कृतज्ञ होता है भगवान के लिए कि आपने ये करवाया. बट अलॉन्ग विद दैट, द यूफोरिया जो है ना, वो ज्यादा लंबा समय नहीं चलता है. बिकॉज देन यू रियलाइज दैट इट्स ओवर. मतलब यू गॉट टू डू व्हाट यू गॉट टू डू नाउ. So I was sharing with them कि जितना जल्दी तुम वापस नॉर्मलसी में आ जाओ, because you got bigger things to do now. And for the world, it's a great achievement. But for you, the journey was more important. So what you became in the journey, from where you were to where you are, that is why you have to set bigger tasks, bigger challenges, bigger objectives. You have to have bigger dreams. You have to have higher aspirations. Not because what will happen to you, what you will achieve, not because of what you will achieve, but what will happen to you in the journey. तो अगर आपने एक हेल्दी बॉडी का एक टारगेट लेके रखा हुआ है, सो वो होगा. हेल्दी बॉडी के लिए आप जाओगे, मे बी यू लूज 10 kgs, और यू हैव सम व्हाटएवर एस्पिरेशन यू हैव सेट फॉर योरसेल्फ. तो जब वो आपकी टोन्ड बॉडी हो जाएगी, जो आपने सोची है कि होनी चाहिए, people will say, "Wow, it is fantastic. You have a nice toned body. You look nice. You look smart. You look handsome, beautiful." Whatever they will say, the world will notice that. And for you, it may be a moment of, you will enjoy that, but it will not be that uh, euphoric for you as the journey from where you were to where you are now. That journey is for you. तो बड़ा जरूरी है ये समझना कि जब हम कुछ अकम्पलिशमेंट करते हैं, हम अपनी कंपनी को ले जाते हैं 100 करोड़ तक, सो वर्ल्ड विल से वाओ 100 करोड़, बिकॉज लोगों की नजरों में 100 बहुत बड़ा है, वो 200 करोड़ बहुत बड़ा है. तो लोग उस 100 की बात करेंगे. लेकिन आपके लिए क्या जरूरत, क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए वो सफर फ्रॉम 10 करोड़ टू 100 करोड़, वो जो आपका जर्नी है, दैट जर्नी इज फॉर यू. पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द जर्नी. Now, when I talk to people that we have touched 1,210 happy minds, तो वो मुझे ऐसे देखते हैं, they have the eyes open, like a goldfish, they have the mouth open, कि अच्छा 1200 सेशन हो गए. हाँ, तो वो 1200 उनके लिए बहुत बड़ी बात, मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए ये 1200 का सफर इंपॉर्टेंट है. Because I've enjoyed every HM. I've lived every HM. And I have so many wonderful memories of so many HMs. And I've made notes at times कि मैंने HMs कहाँ से लिए, HMs कैसे लिए. Even today, I'm struggling with Wi-Fi because somewhere early in the morning, यहाँ होटल का Wi-Fi it conked off. उसको मालूम था आज HM होने वाला है. तो यहाँ we are struggling with. तो we went down and this is अब technician अभी आज Saturday है, वो भी दिन में आएगा. Then things like that. But every HM and all the HMs I've taken,
So I've traveled, I've taken HMs from out of India, from India. I've taken HMs while I was on the road, while cycling, while biking. तो वो जर्नी मेरी है, वो आनंद मेरा है, वो सफर जो है वो मैंने जिया है. And that is, nobody can understand what I went through. Nobody can come even near, even anywhere nearer to what I experienced and what is mine. People can just talk about numbers. तो ये दोनों चीज बड़ी जरूरी है, आप समझो इस बात को, कि एक आपका टारगेट्स का होना या एक एस्पिरेशन का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो आपके मंजिल बन जाती है. लेकिन मंजिल के साथ साथ जो है एक आपका सफर भी होता है. तो सफर जो होता है, मैं ये हिंदी वाला सफर बोल रहा हूँ, इंग्लिश वाला नहीं. तो जो ये सफर है, जो ये जर्नी है, दैट इज फॉर यू. द वर्ल्ड मे नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन दैट जर्नी. वर्ल्ड विल हैव इंटरेस्ट इन वेयर यू हैव रीच्ड, एंड दैट इज ऑल्सो गुड. सो लेट द वर्ल्ड एंजॉय योर सक्सेस और योर रीचिंग, बट यू एंजॉय द जर्नी एज यू गो ऑन. इस जर्नी को मिस नहीं करो. बहुत बार मैं देखता हूं जाने अनजाने में, पीपल मिस आउट ऑन ऑन एंजॉइंग दिस जर्नी. क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होती है, मुश्किलों से भरी होती है. लेकिन मुश्किल चीजें भी तो एंजॉय कर सकते हो ना. मुश्किल चीजों में भी आप एक 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 पॉजिटिव एस्पेक्ट देख सकते हो. बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू लुक बैक, वॉट एवर हैपेंड इन लाइफ, ऑल दैट विच हैपेंड टू यू, इट हैज मेड यू. सो दिस जर्नी इज ऑल्सो गोइंग टू मेक यू. और जितना बड़ा डेस्टिनेशन होता है, उतना ज्यादा आप बनते हो. जितना छोटा फीबल डेस्टिनेशन होता है, उतना ही कमजोर सफर होता है. तो अगर आप सोच रहे हो कि एवरेस्ट चढ़ेंगे, तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए सफर भी बहुत मुश्किल वाला होगा ना. अगर आप सोचो कि एक नॉर्मल पर्वत ही चढ़ेंगे, माउंटेन चढ़ेंगे, तो वो भी सफर नॉर्मल, वो और नॉर्मल होने वाला है. तो एवरेस्ट का सफर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, पर्वती का सफर ऑर्डिनरी होगा. तो डेस्टिनेशन डिसाइड करता है कि आपका सफर कैसा होगा, यादगार होगा, मेमोरेबल होगा. और यादगार और मेमोरेबल तब होता है जब उसमें उतार चढ़ाव होता है, मुश्किलें आती हैं. जब सब कुछ सामान्य होता है, वो मेमोरेबल कैसे होता है? हेलो. हाँ, मेरे साथ हो कि नहीं? आज सब ब्लैक एंड, वो बोलते हैं ना, सॉल्ट एंड पेपर है. My looks are also salt and pepper, and the background is also salt and pepper. हाँ. यस सर, हूं ना सर, जिंदा है हम सर. आर सफर इज विद यू. अरे, खुश कर देते हो तुम. चल सर, आई एम क्लाइंबिंग ऑन द हिल. कौन से, बेड के बाहर वाले हिल पे हो या तुम बेड के हिल में हो? क्लाइंबिंग ऑन द हिल. चलो गुड, आई एम श्योर यू आर ऑन अ मॉर्निंग वॉक. सर सांस ले रहे हैं. अरे, लंबी लंबी सांसें लो सुशील. पंचवटी. चलो गुड, वेरी गुड. So coming back to what I was sharing, this is such an important aspect of life, and let me just give you a bit more insight into that. तो थोड़ा सा आप ये लेके जाओ, and maybe you can hold on to what I'm sharing and what I'm saying. That सक्सेस और खुशी जो है ना, ये या सक्सेस और आपकी मेमोरीज, ये कोरिलेट करो इनको. जो आपकी कामयाबी है, वो कामयाबी का मतलब क्या है? इट विल नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू हैव बीन डूइंग, बिकॉज वो तो हो चुका है. योर सक्सेस विच यू से दैट आई वांट टू फील सक्सेसफुल, तो इसका मतलब क्या है? मैंने जो सोचा है मैं वो कर पा रहा हूं, या जो मैंने एक ठाना है, जो मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, वो मैंने अगर पूरा कर लिया, तो फिर मैं कामयाब हो गया. सो इट कैन बी अबाउट योर वर्क, इट कैन बी अबाउट any aspect of living your life, it can be about your physical fitness, it can be जो भी आपकी जिंदगी में जीना है. आपने कहा कि इसमें मुझे ये अचीव करना है, टारगेट, एंड यू रीचिंग टू दैट टारगेट, यू अचीविंग दैट गोल, द वर्ल्ड कॉल्स इट एज सक्सेस. ये आपके लिए सक्सेस नहीं है, ये दुनिया की नजरों में सक्सेस. सो वेन एवर यू रीच अ टारगेट, एंड द टारगेट इज वर्थ रीचिंग टू, ये बड़ा जरूरी है, दैट देयर इज अ टारगेट एंड इट इज वर्थ रीचिंग आउट टू, द वर्ल्ड विल रिकॉग्नाइज दैट. और अक्सर जो है लोग यहीं पर गलती करते हैं कि उनको लगता है बस यही कामयाबी है कि हम वहां पहुंच गए. पहुंचना जरूरी है, लेकिन पहुंचने के साथ साथ जो पहुंचने का सफर है, मुझे लगता है वो ज्यादा जरूरी है. क्योंकि वो सफर तो हमारे लिए, हमारा है और हमारे लिए है.
वो पहुंचना, वो शायद दुनिया के लिए हो सकता है, वो रिकग्निशन शायद दुनिया देगी हमें, लेकिन ये जो सफर है, ये जर्नी है, ये तो हमारे लिए है। तो कभी भी आप टारगेट सेट करो ना, तो टारगेट सेट करने के बाद बस टारगेट को ऐसा छोड़ दो, एंड देन फोकस ऑन द जर्नी, and see if you can make the journey as beautiful, as memorable as you can. And अनजाने में जाने में बहुत से लोग सिर्फ टारगेट पे ही फोकस करते रहते हैं और वो जर्नी में मिजरेबल रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दैट दे डोंट मेक द जर्नी वेरी मेमोरेबल। और ऐसा भी हो सकता है कि उस चक्कर में वो टारगेट जो है वो और दूर चले जाए, वो टारगेट अचीव ना कर पाए। सो लेट द वर्ल्ड टॉक अबाउट योर सक्सेस, बट यू शुड ऑलवेज हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट योर जर्नी, एंड बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स। तो आप सिंहगढ़ चढ़ो, वो अभी पर्वती चढ़ रहा है मुकेश, तो आप पर्वती चढ़ रहे हो, तो पर्वती चढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, लोग भी बोलेंगे हाँ अच्छा आप चढ़ गए, लेकिन बीच बीच में जो है ना, थोड़ा सा विराम करो, एंड यू लुक एट द वैली, थोड़ा सा स्टॉप, यू स्टॉप एंड यू पॉज, एंड यू लुक एट द वैली, यू लुक एट द डिस्टेंस कवर्ड, एंड यू टेक द सीन इन योर आईज, that okay, I've reached here, not from a aspect of ego and pride. It's from an aspect of you relishing, you cherishing that journey of yours. अरे देखो यहाँ तक आ गए, and the more you relish, the more you enjoy how far you have traveled, the more you will want to travel ahead. That's the beauty of it. तो जर्नी आपके लिए है, डेस्टिनेशन में बी फॉर द वर्ल्ड, बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स नॉट जस्ट बी सक्सेसफुल विद, बोलते ना कि दरिद्र बन के कामयाब नहीं होना है, अमीर बन के कामयाब होना है, और अमीरी हमारे मेमोरीज में होनी चाहिए, और मेमोरीज हमारी क्रिएट होती है जब हम उसको जीते हैं, when we live. So this journey of ours called life, इसका भी डेस्टिनेशन है कि नहीं है? And the destination is the final day. सो वो तो टारगेट है ही, और वो टारगेट की ओर हम सब चल रहे हैं, चाहे हम चाहे नहीं चाहे, ऑल ऑफ अस आर मूविंग टुवर्ड्स दैट टारगेट, एंड द टारगेट फॉर सम इज you know far away, so you don't realize the target is there, but for some they see the target and they say हाँ यार अभी we have reached 40s में आ गए, oh target is not far away, some are in 50s and इससे target और नजदीक आ गया, some are in 60s, वो कहते हैं, तो people who are in their 20s they don't see the target because they don't realize, उनको लगता ही नहीं वो कभी मरेंगे, they feel वो अमर है, they don't think about it. Yeah. So the ultimate target is there. The whole idea is, in this journey of ours to the target, to the final destination, is this journey going to be memorable? So do something, create something phenomenal, take up some big tasks, take up some big challenges, push yourself to some limits. Ask yourself, is this life which I'm living, is it out of comfort, or is it out of complacency, या कुछ और भी कर सकता हूँ? Because the biggest tragedy of our life is not about not reaching to our goals. The biggest tragedy would be we not exploiting our potential. That will be the biggest tragedy. कि आप अपने पोटेंशियल को जी नहीं पाए, जो आप कर सकते थे आप वो कर नहीं पाए, जो आप बन सकते थे आप वो बन नहीं पाए, जो सुगंध आप दे सकते थे आप वो दे नहीं पाए, जो खिलना था आपका आप वो खिल नहीं पाए, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रेजेडी। और वो खिलना, वो बनना, वो सुगंध देने से आप ही अपने आप को रोकते हो। सो बी एज मच एज यू कैन, एंड फॉर दैट you have to kind of anchor yourself to something beautiful, something bigger. Have bigger aspirations from you, have bigger expectations from your own self. Forget about the world, but आपकी खुद से क्या expectations हैं, आप खुद से क्या चाहते हो? और अक्सर हम कहीं अपने आप से कम चाहते हैं, हमें दूसरों से बड़ी उम्मीदें हैं, खुद से शायद जाने अनजाने में कम उम्मीद है, और इसलिए हम अ, कहीं वो उस अपने आप को खींच नहीं पाते। हाँ जी, सो आपकी खुद से क्या उम्मीदें हैं? We are at the beginning of another quarter. October, November, December is ready for us. First 6 months of the financial year gone. First 9 months of the calendar year gone. And we have 3 months left for this calendar year, 6 months for the financial year. तो ये 3 महीने रह गए। अगर हम कैलेंडर ईयर को देखें, 2024 भी जाने वाला है।
Have you realized this? Just 3 months to go. And 24 khalas, khatam. And it is not going to come back ever. It's going to be in your history. It's going to be 24 में ऐसा किया, 24 में ऐसा नहीं किया. तो अभी भी 3 महीने हैं where you can make these 3 months, this 2024, a great year. तो फिर ये साल निकलेगा नहीं, हम जिएंगे इस साल को. So that's how life is. It is just passing by every day, just passing by. And एक realization की बात होती है. तो I'm I believe it's a network problem for sir. Let's hold on for a minute. मैं कब से नहीं था. I don't know how long I've been talking. Just last one statement, sir. अच्छा, ओ तब तक मैं तो ठीक है. लास्ट स्टेटमेंट तो वैसे भी कौन सुन रहा है अभी. हेलो, यू देयर ऑल ऑफ यू. Yes, sir. चलो ठीक. हाँ जी, आई दिस इज द इंटरनेट चैलेंज हियर. तो विल कीप ऑन. ये आएगा जाएगा नेट. हाँ, सो बी विद मी. सो दैट्स अगेन वन मोर मेमोरी बीइंग क्रिएटेड, कहाँ कहाँ से हैप्पी माइंड्स लिया है, कहाँ कहाँ से चैलेंजेस हुए. एंड since I'm traveling, so traveling by, you don't have your entire equipment with you, so I don't have the laptop का वो पीछे का rest, and then lights नहीं होती हैं, and then mic नहीं होता है बड़ा वाला. You have your own small mic, and then you don't have the stand for the laptop. So अभी भी जुगाड़ वाला काम किया. So I have become kind of an expert in जुगाड़बाजी also while traveling. So there's a suitcase and scooper laptop and things like that. So the only जुगाड़ which is difficult is the internet. चलिए. So tell me, what have you picked up from what I have shared so far? हाँ, क्या पिकअप किया आपने? What have you picked up? Let me have some clarity on that. कि आपने क्या पिकअप किया? Would love to read what you have picked up, and if you want to share something, you can also share with me. Samsung बोल रहा है, I'll create memories. Journey should be beautiful. Journey enjoy करना चाहिए. Journey is important. Okay. दरिद्र बन के कामयाब नहीं होना है. अमीर बन के कामयाब होना है. I love this. Test your strength and enjoy the journey. Target and journey both are important. Absolutely, Sachin. From these memories and journey work out the roadmap. Okay. मुसाफिर हूँ. नितिन से ठीक है. Enjoying journey. 3 महीने अभी भी बाकी हैं. और चलो, उल्का ने कहा to do something great this year. That's nice. You got the message. Enjoy the journey. सफर के मजे लो. Goal will definitely happen. Happiness is important in journey. चलो ठीक है. So another element has come in called happiness. So there is something called success and there is something called happiness. इन दोनों का मिलन होना बड़ा जरूरी है. जीना है तो मजे में जियो, रोकर मत जियो. ओके, ठीक. ठीक है. Do keep on typing as and when you realize this. Whatever you realize, you just keep on typing. So maybe your post maybe can be a reminder, can be a repeat for somebody else also. When destination is challenging, then only you enjoy. Challenging in the sense कि when destination is demanding, when destination is stretching you,
When it is normal, you don't enjoy. You don't have great stories to make and great stories to tell the world. It's only when you have a challenging situation in front, which is demanding, which is asking you to give a bit more. Then you kind of create a story for yourself. You create a memory for yourself. Hmm? क्या बोल रहे हैं रघुनाथ? 100 crore टारगेट कंप्लीट करके सेलिब्रेशन कराना है. So we try to achieve this target with all our team members. हाँ, 100 crore का टारगेट कंप्लीट करा के सेलिब्रेशंस करने हैं. डोंट वेट फॉर 100 crores टू टू सेलिब्रेट. मालूम पड़ा आपने कहा कि 100 होगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे, और 100 जब तक नहीं हो तब तक हम दुखी रहेंगे. तो फिर वो 100 भी नहीं होगा. So in between, have small milestones, have small moments of celebration. Don't be grumpy till you reach 100 crores. Don't be in a unhappy mode till you reach 100 crores. 100 crores you will reach, ठीक है. होगा नहीं होगा अलग बात है, but this journey should be worth enjoying. So you should kind of look back at your setbacks. उस जर्नी में नुकसान भी होगा, फायदा भी होगा. तो फायदा होगा तो अच्छी बात है, नुकसान होगा उसको भी देखो एंड से यार अच्छा हाँ ये सीखा, wow, this is awesome. And you kind of start enjoying your setbacks also. So you learn from your setbacks and you make it worthwhile. You are happy about your small victories, and that's how the journey should be. So don't wait. I am not saying that he is saying this, but I'm just saying कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट के पीछे हम इतने पड़ जाएं कि हम जर्नी में हम खुश होने से रह जाएं. So let happiness be a part of your life while in the journey of you achieving something bigger. Ratnali says, remembering K2K. Oh yes, there's so many stories which I have from K2K, and destination decides how the journey was. Absolutely. The more demanding the destination, the more beautiful are the chances of the journey being beautiful. नहीं sir, we celebrate all our targets, but this year we plan to complete target. ठीक है, okay. चलो रघु, बढ़िया. You plan to complete target, good enough. Ratnali Nair, she spoke about K2K, and I've spoken about the story many times. I've on various platforms I've spoken about it, and एक बार और मन कर रहा है आपको हल्का सा उसका एक फ्लेवर दूं, and see if you can connect this story of mine in whatever aspect of your life or whatever you are trying to achieve. उससे अगर connect कर पाओगे तो अच्छा होगा. And I've had many such stories. उसमें से ये वाली story जो है, this is what people time and again say, सर ये वाली story सुनाया करो. So this story is of me cycling from Pune to Kanyakumari, and this can be any journey. So this you can Raghu, you can have this story from your company also कि आप 100 crore पे जा रहे हो. So we cycled from Pune to Kanyakumari. Kanyakumari became a destination. For you, it is 100 crores destination. For somebody else, it can be 50 crores. For some, it can be 200 crores or whatever it is. For some, it can be a great bodies. For some, it can be another aspect of life. तो आप उसको correlate करो, आपके लिए वो क्या मायने रखता है. So every day we had to cycle some 100 kilometers, 150 kilometers, depending on which place we are cycling. So if it's a hilly zone, we will have to cycle less. And then if it's a normal road, we'll cycle 150 odd kilometers. तो हमें वो 10-12 दिन में 1600 किलोमीटर टच करना है. And all are kind of chasing that target. So target set कर लिया, you are kind of now dedicated, focused to target. So first day when we cycled and we reached Satara, around 120 odd kilometers from Pune. So I realized that at the end of the day, everybody was euphoric about the 120 kilometers we did. And the whole evening when we were sitting and having dinner, everybody's talking about, 120 kilometer ho gaya. Then some calculations started happening. Acha abhi 1500 kilometer reh gaya hai. Then the calculation about tomorrow we have to cycle so much, and which is not bad, which is right. You got to do that. So, but the entire flavor of all the cyclist was, the flavor was all about kitna kiya, kitna reh gaya, kal kitna karna hai. So it was kind of a dry communication. I'm not saying that communication was not important, but बड़ा सूखा communication था. उसमें juice नहीं था, आनंद नहीं था. And that's where I realized that I need to step in. And I said, hello, since I happen to be a leader, कल से जो है, I will
take charge of or I'll lead the entire group. Not that because I'm the best cyclist amongst all of you, but I decide to lead the cycling group. So when I say I'll in a cycling, उस समय की बात है, 2010 की बात है. तो not many groups would cycle long distances. We would not, we didn't have any kind of reference point कि जिनसे हम समझें कि cycling कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है. हम लोग निकल गए थे. So we had our own antique ways of communicating with each other. So we had our mobile phones. We had a whistle also with us. तो उसमें हमने रूल सेट किए थे कि एक साइकिलिस्ट आगे रहेगा एंड देन द फर्स्ट साइकिलिस्ट उसको क्रॉस नहीं करने का है. बिकॉज इफ यू क्रॉस साइकिलिस्ट एंड आप आगे निकल गए एंड सपोज वी हैड टू स्टॉप समवेयर पीछे, तो जो आगे निकल गया उसके लिए वापस आना मतलब जान पे आती है. बिकॉज यू हैव टू साइकिल, इट्स नॉट अ मोटर दैट यू बूम करा वापस आ गए. सो यू हैव टू पेडल बैक. और अगर आप 5 किलोमीटर आगे निकल गए, इसका मतलब 5 और 5 10 किलोमीटर आपकी एक्स्ट्रा साइकिलिंग हो गई. इट्स अ पेन. एंड 10 kilometers of cycling means almost around half an hour, 45 minutes of cycling, and you get very tired. तो हमने फिर कुछ ग्राउंड रूल्स किए थे कि फर्स्ट साइकिलिस्ट को कोई टेक ओवर नहीं करेगा. So I said, next day onwards, I'll be the first cyclist. I'll lead the group. And second, I said, you're all talking about we have so many kilometers left, but a time will come when we will reach Kanyakumari and you will not feel anything. You will not feel anything. तुम लोग को कुछ लगेगा नहीं. So all of them looked at me and said, what do you mean कुछ लगेगा नहीं? तो हम जा क्यों रहे हैं अगर वहां कुछ लगेगा नहीं तो? If you're not going to feel anything, then why this all मारामारी? Why this cycling expedition? आप हमें encourage कर रहे हो, discourage कर रहे हो? I said, no, I'm just saying what I feel is right. You will not feel anything. And then I said, that is why. Let me lead you from tomorrow. And don't question. And then next morning onwards, I led and they had to listen to me because I happened to be the lead at that time. So, सब मेरे साथ गए and I made them do things which they had never expected to do in life. While cycling, I stopped at places which they would have missed because the focus was on reaching Kanyakumari. I made them swim in rivers. I made them, travel in a boat. वो राउंड वाली एक जो उसकी बैम्बू की बोट होती है, उसमें उनको मैंने बोटिंग करवाई. I made them stay with the fishermen in the river, tribal fishermen. I made them stay at sea beaches. I made them sleep on temple floors. I made them sleep in the best of 5 stars without paying money. I made them eat food in places which they have never imagined. I made them jump into the well. Uh, and we cycled also and we did all that also. And then a day came. After 10 days, we reached Kanyakumari. So we were cycling towards Kanyakumari. Listen to the story and you will understand what I'm communicating or what I want to communicate to all of you. So we are pedaling and you can imagine that we are pedaling. So we're pedaling towards that last spot from where we intended to go to by a steamer to Swami Vivekanand Smarak. और हम वहां पर अगर आप लोग गए तो आप लोग समझोगे कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ. और हम लोग वहां बैठे हैं, पीछे स्मारक है समुद्र में जाके बीच में, और हम लोग वहां बैठे एंड देन पीपल आर कॉलिंग अस फ्रॉम होम्स, फ्रेंड्स आर कॉलिंग अस दैट ग्रेट वंडरफुल कांग्रेचुलेशंस. एंड मैं बैठे सबको देख रहा हूँ, सब लोग फोन में बात कर रहे हैं एंड आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ देम. एंड आफ्टर हाफ एन आवर और सो एवरीबडी कम्स एंड सिट्स एंड आई सेड, हो गया तुम लोग का बात करने? हाँ, 5 minutes वी स्पोक अबाउट कहाँ कहाँ से फोन आए, किसके फोन आए. And then after 5 minutes, I just kept on looking. So they said, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? Then one of them said, oh, मैंने क्या हुआ? कल से क्या करेंगे? So it's over. I said, हाँ, अभी कल वापस जाएंगे. Another one said, ऐसा खाली खाली लग रहा है ना? Then one more said, मुझे आपकी बात याद आई, आपने कहा था कि you will feel nothing when you reach कन्याकुमारी. मुझे लग रहा है हमने कुछ किया ही नहीं है. People are saying congratulations. तो हमने कहा यार ठीक है ना, कौन सी बड़ी बात है, पहुंच गए कन्याकुमारी. And then I said, what has happened is when you reach the destination which you thought was big some time back, on reaching the destination, that initial euphoria is there. Uske baad, it is normal for you. It is normal for you. For the world, it is big, but it is okay for you. So if it's going to be okay for you when you reach 100 crores, then what is going to be beautiful for you? What is going to be important for you? And then I said, let's go back to the last 10 days and let's understand what happened with us.
Is the net on? Just give me a thumbs up. Okay. Yeah, thanks. So I said, let's go back to those 10 days and understand what happened with us. And then we sat and we started recounting what all we did. And as we spoke about what all we did, we stayed in some jungle resorts, we did all that masti. And for the next half an hour, we were all laughing, we were talking, we were animated in our sharing. Arey ye kiya, wo kiya, aisa hua, aisa. And I said, this is what life is. Now, no matter how much I want to tell or how much you want to tell the world that this is what you did, this is where you lived, this is what how you cycled, this is what you ate, people will not be interested because they did not do that. They are not able to understand because you were doing it, you were in that state, you enjoyed, you were sitting on a cycle, you have your legs bruised, you have your back paining, you have your bums paining. That is yours. Nobody will be able to understand your pain. Nobody will be able to understand your enjoyment. वो सिर्फ सुनेंगे बट वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जितना आप कर पा रहे हो. वो सिर्फ कनेक्ट करेंगे कि आप कहां पहुंचे. And that's what they have done. They have called on you and they have said, wow. But they will never be able to understand what you went through. What you went through is purely yours. Where you reached is maybe for the world, but what you went through is purely yours. तो जो तुम्हारा है, which is going to be purely yours, उसको तो मत खो, just for the sake of reaching somewhere. And that is what is called you enjoying the journey. So dialogue बाजी बहुत है आजकल की दुनिया में. So everybody says, yeah, enjoy the journey. But समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? Everybody's talking about, you have only one life, YOLO. क्या है वो कुछ concept है, YOLO, you only live once. But dialogue तो बोल दिया, इसका मतलब क्या है? So before you move to your final destination, and then people will talk about the destination. He came and he left. In that, the journey is yours, which is going to be purely yours. Is that journey enjoyable? Is that journey worth taking? And that is up to us. That's absolutely up to us. So that 100 crores, the world will talk about it. But in that process, what are we becoming? That you have to ask. वो 100 करोड़ पे पहुंचते पहुंचते हमने कुछ रिश्ते खो दिए. वो 100 करोड़ पे पहुंचते पहुंचते हमने अपनी कुछ अच्छी बातें खो दी. हमने कुछ अपनी अच्छी आदतें खो दी. हम कुछ गलत कर गए. तो वो 100 करोड़ पे पहुंच के भी क्या मतलब है? What's the point? वो 100 नहीं पहुंचे, 90 पे पहुंचे, लेकिन हम जो थे हमने वो छोड़ा नहीं. हम कुछ और अच्छे बन गए. हमने कुछ और काबिलियतें बिल्ड कर ली. हमने कुछ अच्छे मोमेंट्स अपने साथ रख लिए. तो 100 नहीं भी पहुंचे चलेगा, but that 90 will also be worthwhile because we became somebody in the process. And that's what you got to understand, because we are all the time always becoming. Life is living. So as long as we are living, we are becoming. Now what we are becoming, it depends on us. हम क्या बन रहे हैं, right? So I'm taking the HM. You're listening to the HM. So we're all in that state of momentum. हम मूव कर रहे हैं, तो हम कुछ बन रहे हैं. Every time we are becoming somebody. What that becoming is, you got to be conscious about. So when you watch your reels, cut, हम कुछ बन रहे हैं. तो कुछ लोग वो बोल फेसबुक में है तो फेसबुकिये बन रहे हैं. They are all on the reels. आप कुछ बन रहे हो. So are you becoming someone for the better or are you becoming someone for the worst? तो वो बनना क्या है, वो आपको सोचना है. तो जर्नी तो हो ही रही है आपकी लाइफ. उस जर्नी में आपने बीच में छोटे छोटे गोल्स लिए. ये 100 करोड़ का गोल हो गया, ये मैराथन का गोल हो गया, ये कुछ और करने का गोल हो गया, कुछ खरीदने का गोल हो गया. उसके लिए आप कुछ बनते जाओगे. वो बनना बड़ा जरूरी है. आई थिंक मोर देन पाना, बनना इज इंपॉर्टेंट. More than you achieving something in life, you're becoming something in life is very important. Because if you become, achievements can happen. इस 100 करोड़ की जर्नी में अगर आप कुछ अच्छे बन गए और आप 100 नहीं पहुंच पाए,
लेकिन 80 में पहुंचे, 90 में पहुंचे, लेकिन आप कुछ बन गए, तो अगले साल 100 तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि आप बन गए। लेकिन वो 100 में ही फोकस है, वो 100 में जब फोकस है और आपने बनने में फोकस नहीं किया, तो शायद 100 आ जाएंगे, कुछ उधेड़ बुन करके, मारा मारी करके 100 आ जाएंगे। लेकिन वो 100 अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे मालूम नहीं, क्योंकि आप कुछ बने नहीं। एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड, कि वो अच्छी बॉडी बनाने के लिए आपने कहा बना लेते हैं, तो स्टेरॉइड लो, ये लो, वट एवर इज डन टू टू गेट दैट बॉडी, बट आप बने नहीं ना हेल्दी। वो एक बार तो बना दी बॉडी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या? एंड दैट्स अ चैलेंज। हाँ जी। As usual, this is your master stroke to all to understand the difference between target and journey. Oh, love you. Arey wow. Thank you, Subhash. Love you for resonating this point. At the moment, enjoying journey of connecting with Chrysalians as I want to see all of them on 26th. Arey wow. So what Ratnali is saying is Sagar says, I'm with you, sir. So Ratnali ने एक point और बोला कि she's looking forward to connecting with all the Chrysalians. So one more time, just want to remind you, 26th is Deepavali Milan, Deepavali Mahotsav. So we are, as at Chrysalis, we are organizing Diwali Mahotsav, and a lot of Chrysalians are behind this beautiful initiative. So they all are looking forward to connecting with all the Chrysalians. All Chrysalians who are listening to me, आप सबको क्रिस्टलियंस की तरफ से इनवाइट है फॉर दिवाली महोत्सव इवनिंग. So we're going to have some wonderful time. We're going to have people performing on the stage, and we'll have some lovely dances. We have some lovely artists who are going to be there, and of course, I'll also be there to share my thoughts. And from evening 6:30 to 8:30 के हिसाब से ये है. And come dressed, all Christians come dressed in the best Deepavali, traditional dress which you have. We have some beautiful, lovely surprises for the most well-dressed person, the most well-dressed couple, the most well-dressed family. तो बहुत सारी चीजें करी हुई हैं सारे क्रिस्टियंस ने. So don't miss out on that on 26th. But it is only for Christians since the space is limited. So Christians means जिन्होंने जिन्होंने लाइफ 360 किया हुआ है, और जिन्होंने गेम ऑफ बिजनेस या फिर अरा समस्ती किया हुआ है, ये उनके और उनके परिवार के लिए. So that is just want to give you so, and you have to register, you have to give a name so that we have the back end thing lined up. So be there for that. सागर कह रहा है, I'm with you, sir. To get the link for Diwali, okay, वो आपको लिंक दिया हुआ है, you can register RSVP, okay. औरों के लिए आपकी किस्मत वाली होती है. कीमत क्या नहीं करते. क्या लिखा है सुशील तुमने? कीमत वही करता है जिसके आप जिसमें संघर्ष देखा है, जिसने आपका संघर्ष देखा है. एब्सोल्युटली. हम्म. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, औरों के लिए आप किस्मत वाले होते हो, क्या है सुशील, कभी कभी अच्छी बात कर लेते. So he says, those who have not seen you, seen you struggling, those who have not seen you working hard, slogging for what you are, what you have in life, for them you appear to be lucky. अरे यार किस्मत अच्छी है यार. Lucky man. So when Sushil got married to Poonam, people said, "Oh, lucky man." But his friends knew कितनी स्ट्रगल करी है इसने, कितनी स्ट्रगल करी, कितनी मारामारी करी है to make Poonam say yes. Am I right, Sushil, or not? तो जब आपने मेहनत करी होती है और उस मेहनत को कुछ लोगों ने देखा होता है, उनको ही आपकी कामयाबी की कीमत मालूम होती है. And the one who has seen your struggles, the one who has been with you in the struggles is you. One who has enjoyed those struggles is you. So let this journey be enjoyed. Don't be a khadus, don't be a daridra in terms of the journey of your success. Enjoy it, and whether you will reach there or not reach there, वो बात की बात है.
ये सफर इज मच बिगर इन क्वांटम, इन क्वांटिटी, इन मेमोरी, इन इम्पैक्ट देन द जर्नी. तो आईपीओ का जर्नी हुआ और वो खत्म हो गया ना, वो दैट डे इट वाज देयर एंड इट गॉट ओवर इन दैट हाफ एन आवर, 1 आवर. सो 3 साल का पूरा सफर, एंड इट गॉट ओवर इन दैट 1.5 आवर्स टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि उसके आगे कुछ नहीं होगा, बट वो पूरा हंगामा 1.5 घंटे में खत्म हो गया. बट वो 3 साल का सफर इज क्वांटम वाइज बड़ा, इम्पैक्ट वाइज बड़ा, मेमोरी वाइज बड़ा. वो 1.5 घंटा जो है उसके आसपास भी नहीं है वो 3 साल के सफर में. एंड दैट इज व्हाट द पावर ऑफ अ जर्नी इज. द जर्नी इज गोइंग टू बी एनी टाइम बिगर, impactful than the destination. Let you have both the ends, the journey as well as the destination. दोनों का आप संगम रखो साथ में. Oh, I'm coming with my family and friends. No, no, no friends. Sagar, if only Chrysalians are allowed. No friends allowed. Only Chrysalians, please. I would love to have only Chrysalians there because space is limited and we'll for friends we'll have एक बड़ा इवेंट बाद में करेंगे. That will happen in January. ठीक है. Only for Chrysalians. हाँ. चलो. Anybody has any questions? अश्विन कह रहे सर सुशील के लिए स्ट्रगल उसका साथी है. तो अश्विन कह रहे सर मैं ही स्ट्रगल हूँ और सुशील. चलो. Any insights, any questions? If you had, you can bounce off your questions and your queries. And so, did it make sense what I shared with you about the destination and the journey? इसके बीच का correlation क्या है? इनका आपस का संबंध क्या है? Have you been able to connect with that? So, wherever you have set a destination for yourself, just connect this entire concept which you have understood, which you have heard from me. Ensure this journey got to be beautiful. Ensure that you make this memorable. Because इसी में तो कहानी निकलेगी ना. You can't just tell somebody that, oh, we went to, uh, stock exchange and we got our company listed. That's not a story. People will say, okay, congratulations. That's what they will say. But if you really want them to have a great time with you, you will share about the story of last 3 years, 4 years, what you went through. And in the process, what you became. In the same way, a time will come and you will have your grandchildren when you'll be 70, 80 years of age. And then you will have your life as a journey just behind you. So what you have to tell them, what you have to share with them, that question should be there on your mind. कि क्या story होगी मेरे पास? Would it be just a flat story with nothing great? Because nothing great you picked up as a destination, so there's no great journey to talk about. You should have loads and loads and loads and loads of stories with you. And that those stories will be your treasure. वो आपका खजाना है. तो अगर अमीर बनना है तो अपनी कहानियों में बनो. और अगर कहानियां अमीरी वाली होनी चाहिए तो उसके लिए जीना भी वैसा होना चाहिए. तो जितना मेमोरीज क्रिएट करोगे, अच्छी वाली, बढ़िया वाली, संघर्ष वाली, मस्ती वाली, उतनी अच्छी कहानियां होंगी. और जितनी अच्छी कहानियां होंगी उतना बताने में आनंद आएगा. और जितना बताने में आनंद आएगा उतना लोगों को सुनने में आनंद आएगा. और जितना लोग सुनेंगे उतना वो इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे अपनी जिंदगी को अच्छा करने के लिए. आई थिंक दैट्स व्हाट वी ऑल गॉट टू डू. वी लिव अ लाइफ इन सच अ वे. All of us, we got to live a life in such a way that our life becomes, a story worth telling. Our life becomes a journey worth speaking about. And maybe a few lives get inspired by the way we have lived our lives. And in that process, the world becomes a better place, right? Because that's what the capability of each one of us is. An animal does not inspire any other animal. It's only human capability and human capacity that we can get inspired to live a better life by watching anything. So we watch an animal and we can get inspired. We watch an ant. हमने चींटी को देख के भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. हम पेड़ को लेके भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं. हम एक
ब्लेड ऑफ ग्रास, एक घास के तिनके को देख के भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो जो हम सब चीजों से, जीवित अजीवित चीजों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, तो फिर एक जीता जागता इंसान से जो अच्छी जिंदगी जी रहा है, उससे क्यों नहीं इंस्पिरेशन ले सकते? एंड दैट्स व्हाट वी ऑल गॉट टू अंडरस्टैंड, दैट वी गॉट टू बी दैट लिविंग और डेड sources of inspiration. But there are so many. I was writing about Stephen Covey, कि उनकी बुक जो है Seven Habits of Highly Effective People has been a great source of learning for me. And I said, wow, isn't it amazing? स्टीवन कवी साहब नहीं है रहे अभी, लेकिन उनके जाने के कई साल बाद भी हम उनसे प्रेरित हो रहे हैं. The way he's lived his life, the way he's left his words around is inspiring the world long after they have gone. And that is why we call them legends. Legends वो होते हैं जिनके जाने के बाद भी दुनिया इंस्पायर होती रहती है उनकी जिंदगी से. राइट. सो आई एम नॉट सेइंग हम लेजेंड बनेंगे, नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम जिंदगी तो ऐसी जिए जिसको मरने से पहले बताने के हम योग बने. एंड दैट्स व्हाट माय विश इज फॉर ऑल ऑफ यू. हाँ जी. लहू सेज आई एम इंस्पायर्ड विद थिंकिंग हाउ डिफरेंटली थिंग्स शेयर. थैंक यू सर. ओके, गॉड ब्लेस यू लव. थैंक यू फॉर शेयरिंग. गॉड ब्लेस यू. Sushant says, Subhash says, sometimes actions which we took to achieve targets take us away from what you said today regarding enjoying the journey. हाँ, वो टारगेट ही इतना गंभीर होता है कि हमें वो, हम उसमें खो सकते हैं. तो there there are two ways to look at it. Or maybe there will be two voices in the world. One voice will say टारगेट में खो जाओ, अपने आप को उसमें मेरा डुबो दो. जब तक डुबोगे नहीं अपने आप को टारगेट में, टारगेट अचीव नहीं होगा. एंड थिंग्स लाइक दैट. वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट है. मेरा स्कूल ऑफ थॉट बड़ा सिंपल है यार. टारगेट सेट कर दिया ना, ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया, मैंने एंकरिंग कर दी ना, तो हर दिन एंकरिंग के लिए 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट एंकरिंग को दे दिया कि हाँ यहाँ जाना है, और बाकी पूरा दिन फिर उस जाने में लगा दिया. दैट्स द वे इट इज. अब मैं उसमें इतना खो जाऊं कि उसका लोड लेके अरे वहां जाना है, अरे वहां जाना है. ऐसे नहीं है वो. आप फिर आप उस जर्नी के जो आनंद है ना, सफर का जो आनंद है, आप उसको खो दोगे. सो लेट इट नॉट बी सो ओवर पावरिंग ऑन यू that that becomes the load. It should become a reason. It should not become a load for you. It should become a reason for you to live a life in a better way. It should become a reason for you to stretch yourself. It should not become a load. The moment it becomes a load, the joy is lost. And even if you reach there, it is not worth reaching here. So let this life not be a load. Let it be a joyful journey. Let your death be a reason why your life, your current life, should be beautiful. Let death not be a load for you to live your life. Let it be a reason for your life to be so beautiful. आज इतना ही चलेगा. आज विराम किया जाए. So we have love you all for being here, and we have our business batch. If you are an entrepreneur and if you're looking for growth in your business, we have our business batch lined up. Arasamasti coming up. Our 40-second batch. अपने दोस्तों से शेयर करो, अपने entrepreneur friends के साथ शेयर करो. See if they want to be a part of our program, and so many of you are doing it, so many of you have done it, but more the merrier. तो आपके ध्यान में आपके दोस्त लोग होंगे, दुश्मन लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे हैं, जिनको आपको लगता है अच्छा बिजनेस करना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट आई डू. आई मेक द जर्नी ऑफ डूइंग बिजनेस बिकम मेमोरेबल. तो बिजनेस सभी करते हैं, लेकिन मेमोरेबल तो बहुत कम लोग उसको बना पाते हैं. एंड दैट्स व्हाट आई इंटेंड टू डू. सो लव यू ऑल फॉर बीइंग हियर फॉर दिस एचएम, एंड I'll connect back next week one more time. कैसा रहा आज का एचएम भाई? How was it? और आने दो सर, मजा आ रहा है. गॉड ब्लेस यू तेज. चलो, चंद्रमोहन, सुभाष, संतोष, संतोष says, हाँ सर, part of journey towards next HM. चलो, great. Sachin, love you Sachin, Ganesh, वैभव,
you're a powerful charger for our human mobile. अरे